Hi, welcome everyone to today's episode of Guideline Review of the Week. Today, we are going to be talking about something that I believe we all have been seeing in all our OPDs. Probably every fifth or sixth patient in a perimenopausal period has this finding if you're going to be doing an ultrasound. There is a lot of discrepancy. That's a word that I use quite often, and that is because I prefer to talk about topics in these videos of Grow on topics that have discrepancies in them. So yeah, this topic has a lot of discrepancy on how do we manage them. It differs from a setup to another. In government institutions and teaching institutions, we have a very low threshold for doing operative interventions on these patients because the residents have to learn. Whereas the approach is also a lot more towards laparotomy. Whereas if you're going to be going into a private setup, the approach is going to be a lot more conservative, and if required, it is going to be laparoscopic. So it differs from place to place, institution to institution. But there are a few set of guidelines because you need to know what is the correct way ahead for managing these patients. So the topic for the guideline for this week is going to be endometrial hyperplasia, and I have gotten this guideline again from the Royal College of Obstetricians and Gynecologists. This is made in conjunction with BSGE, that is British Society of Gynecological Endoscopists. So this is a guideline that they both have made and has been approved by NICE as well. It was published in 2016, but there has not been any significant change that has come through since then, apart from the nomenclature for endometrial hyperplasia, which I'm going to be talking about today. So, welcome to today's episode, and let us proceed with today's lecture. So, the first question that should arise or that must arise is a very basic one. What is technically endometrial hyperplasia? So, as it is given over here, endometrial hyperplasia is defined as irregular proliferation of the endometrial glands with an increase in the gland to stroma ratio. So, gland, obviously, as you know, is the adenosquamous epithelium, the glandular epithelium that lies on the endometrium, and the stroma is the connective tissue or the supporting structure to all those glands. So it is just an epithelium with the supporting structure. But when this ratio is distorted and there is an increase in the number of glands that are present inside, that is when we say that the stroma, the gland to stroma ratio has increased, and we call that endometrial hyperplasia. Obviously, it is one of the I mean, just because, and just as we see a lot of these cases in our outpatient departments, and the most common complaints that they come to us with are heavy menstrual bleeding or even postmenopausal bleeding. So, of course, endometrial hyperplasia is very common, but also endometrial cancer is the most common gynecological malignancy in the Western world. Now, why is this so? Now, a very basic thing that we all know. How does an endometrium grow? It is sensitive to estrogen, so estrogen causes proliferation of those glandular epithelium, whereas the progesterone does well to cause atrophy, to basically lyse or break down those endometrial growth, that endometrial growth that has happened. So they both act against each other to maintain a balance between the two. But whenever there is an excess of estrogen, which is mostly in cases of obesity में क्या होता है, अपना जो पेरीफेरी का फैट होता है, the adipose tissue that is there, it contains the enzyme aromatase. Now this aromatase converts testosterone to estrogen, so that estrogen production is increased, and this estrogen in obese women comes and acts onto the uterus, onto the endometrium, and it causes endometrial hyperplasia. Now obesity is literally an epidemic in Western countries. They have come beyond infectious causes of cancer, which is still prominent in India in the form of cervical cancer, and hence endometrial cancer is the leading cause of gynecological malignancy in the Western countries, especially because given the food habits and everything, which in fact is now even coming to India. Obesity as a pandemic or an epidemic is coming to India as well, but it is still more, and it was historically more in the Western countries, and hence it is the most common gynecological malignancy. Again, as we spoke, that the most common presentation is in the form of endometrial hyperplasia, in the form of abnormal uterine bleeding, or what we can also call as heavy menstrual bleeding or post-menstrual bleeding. The next line exactly mentions that heavy menstrual bleeding, intermenstrual bleeding, irregular and unscheduled bleeding when on hormone replacement therapy, and postmenopausal bleeding. Now, what does this mean? Hormone replacement therapy is basically the therapy that women take after menopause to avoid the menopausal symptoms. Symptoms like vasomotor causes, hot flashes that they get,
or the sweating, the profuse sweating that they get, osteoporosis, all these things they can be prevented by giving these women hormone replacement therapy, of which estrogen is a major component, because body में जब estrogen का deficit आता है तब ये symptoms आते हैं. So when these women are given this kind of treatment with estrogen and progesterone, they get that unscheduled bleeding. Unscheduled is basically when they are not sure कि monthly आना चाहिए, नहीं आया है. I'll be talking a bit more on HRT towards the end of this topic. So it also presents that unscheduled bleeding, which they had not thought कि अभी आएगा when they are taking hormone replacement therapy. So now, what are the major risk factors जिसके वजह से endometrial hyperplasia होता है? So as we already spoke that the most important risk factor is endometrial hyperplasia develops when estrogen when it is unopposed by adequate progesterone. Body में progesterone तो है, post menopausally वो progesterone भी चला जाता है, but if there is an excessive estrogen that is coming through from any source, it stimulates this endometrial cell growth by binding to the estrogen receptors. Now, estrogen and progesterone are steroid hormones, so they act on receptors which are present in the nucleus. We all know that cell membrane पे बाकी सब receptors होते हैं, whereas nucleus के अंदर होता है steroid का receptors. क्यों? Because it goes and directly then binds to DNA. DNA के ऊपर काम करके वो proliferation बढ़ा सकता है. It increases the cell growth. In this case, the endometrial cell growth. So the known reasons for this is obviously increased body mass, as we spoke of, with excessive peripheral conversion of testosterone in the adipose tissue to estrogen. Then anovulation which is associated with two things. First is perimenopause. Perimenopause matlab kya? The female has come to an age around the time of 45-50 years of age when she is about to have menopause. So around this period, the ovulation stops. The ovulation stops because the number of ovum which are present in her ovaries is done. It is basically खत्म हो चुका है वो. तो इसके वजह से सिर्फ बॉडी में there is just estrogen. There is no progesterone because of the lack of ovulation. There is no corpus luteum that is forming. Corpus luteum, if you remember, is the source of progesterone. So when anovulation occurs, there is no progesterone. There is no corpus luteum. There is no progesterone, and hence there is unopposed estrogen production which acts on the endometrial cells. Similarly, a same thing happens in women with PCOD. PCOD, polycystic ovarian disease, जिसमें भी again there is anovulation. ये anovulation की वजह से multiple follicles तो बनते हैं ओवरी पे, बट कोई ओव्यूलेट नहीं करता है. ये ओव्यूलेट ना होने के कारण there is no corpus luteum, और अगर corpus luteum नहीं है तो again progesterone नहीं है. So in these cases there is going to be endometrial hyperplasia. Apart from that, rarer causes include estrogen secreting tumors. The important one of them is granulosa cell tumor. Now, granulosa cells are the ones which produce estrogen in the ovary. So when these increase, now there are two age groups. एक तो juvenile granulosa cell tumor होता है और एक adult onset granulosa cell tumor होता है, which is seen classically after the age of 50. The juvenile one is seen below the age of 15, 10 के पीछे के age में पता आता है. In this, the granulosa cells are proliferating and they are producing excessive estrogen. Now, this excessive estrogen will again act on the endometrial cells and cause proliferation. Also, drug-induced endometrial stimulation, that is when systemic estrogen therapy is given. I don't believe that this is a very significant thing, because we often give progesterone alongside estrogen. It is very rare that we are giving just estrogen to a female. Apart from this, there is something called as tamoxifen. Now, tamoxifen is a selective estrogen receptor modulator. It is a drug that is given classically in the treatment of breast cancer for patients who are estrogen receptor positive patients. So ये जो breast cancer वाले patients होते हैं with estrogen receptor positive status, वो histopathology पे पता चलता है. These women are given tamoxifen, which is a therapy. दिस इज अ सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर. इसका ये मतलब है कुछ जगहों पे इट हैज एन एगोनिस्टिक एक्शन, एगोनिस्ट का काम करता है, और कुछ जगह पे एंटागोनिस्ट का काम करता है, विच इज बेसिकली ऑपोजिंग द इफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन. सो यूट्रस में इट इज एन एगोनिस्ट एंड इन द ब्रेस्ट इज एन एंटागोनिस्ट. सो ये एंटागोनिज्म की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रेमिशन होता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो एंडोमेट्रियम होता है उसमें प्रोलिफरेशन होता है, बिकॉज इट इज एन एगोनिस्ट एट द लेवल ऑफ एंडोमेट्रियम. सो टैमोक्सिफेन एज वेल. So now the biggest question and the biggest, I believe, discrepancy in this is how should it be classified? अभी तुम लोग ने तुम्हारा रिपोर्ट देखा रहेगा एंड व्हाट यू हैव लर्नड इन योर अंडर ग्रेजुएशन में तुम लोग ने पढ़ा था कि देयर इज ईदर सिंपल और कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया एंड देयर इज एटिपिया और
टिपिया या फिर टिपिकल, तुम लोग इसको एटिपिया को एटिपिकल भी बोल सकते हो, टिपिया को टिपिकल भी बोल सकते हो। सो ईदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, जिसमें सिंपल एटिपिया या फिर कॉम्प्लेक्स एटिपिया होता है, या फिर द अदर ऑप्शन इज सिंपल टिपिया और कॉम्प्लेक्स टिपिकल। So this was very confusing. यहाँ पे multiple बनते थे. Simple and complex was based on the structure or the morphology of the glands. The more the branching, the more the proliferation, we would call it complex. Typical and atypical, you all have studied in your neoplasm, in your pathological lectures, in your MBBS कि how is an atypical cell differentiated from a typical cell? एक तो उसका nucleus बड़ा होगा, then the nucleus would be displaced peripherally, मतलब अगर सेल है उसके सेंटर में नहीं होगा, एक एंड में होगा, nucleus के बाजू में there is going to be an halo. The cell margins are going to be irregular. So all these features are a part of atypical cell, which is basically a precursor to the formation or a precursor to cancer. So in this case, इतने सारे क्लासिफिकेशंस रहते थे. अभी ये था 1994 का WHO क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. ये सिंपल हाइपरप्लेजिया, कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया, सिंपल हाइपरप्लेजिया को ही हम लोग सिंपल हाइपरप्लेजिया विथ टिपिया ये वाला बोलते हैं. कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विथ टिपिकल सेल्स को कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया बोलते हैं. देन सिंपल हाइपरप्लेजिया विथ एटिपिया और कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विथ एटिपिया. दिस वाज बिकमिंग वेरी कंफ्यूजिंग एंड दिस वाज समथिंग दैट पैथोलॉजिस्ट यूज और बहुत कंफ्यूजिंग होता था. तो उसके बाद में लोगों ने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और उन्होंने बोला वील हैव एन अल्टरनेटिव सिस्टम विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013, जिसको लोग ने बोला जैसे CIN होता है, दैट इज सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया, तो दे डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस EIN, endometrial intraepithelial neoplasia. But again that was seen ki it is not giving out a good outcome. It is saying ki it was not easy to follow. So 2014 में WHO ने बोला कि अपन एकदम सिंपल वे से जाते हैं. 2014 WHO क्लासिफिकेशन, उन्होंने बोला we'll just have two segments, hyperplasia without टिपिया या फिर atypical हाइपरप्लेजिया. बेसिकली उन्होंने बोला हम लोग इधर टिपिकल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं या फिर एटिपिकल हाइपरप्लेजिया बोलते हैं. वी विल रिमूव द टर्म्स सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सो 2014 वालों ने बोला, 2014 में WHO ने बोला कि वील जस्ट हैव टू कैटेगरीज, इधर देयर इज हाइपरप्लेजिया विथ टिपिकल सेल्स और देयर इज हाइपरप्लेजिया विथ एटिपिकल सेल्स. ये सिंपल कॉम्प्लेक्स ये सब निकाल देते हैं. वील जस्ट कीप इट एकदम सीधा साधा. एंड दिस इज द लेटेस्ट classification for endometrial hyperplasia which has to be used. Unfortunately, a lot of pathologists still use the earlier 1994. ये था ऊपर वाला जो हमने देखा था, ये 1994 वाला था. So ये 1994 वाला ही अभी भी काफी सारे यूज करते हैं. So you need to know उसका क्या significance है और उसमें क्या करना है. But if you are asked in the exams, this is the one that you are supposed to be following. So now what are the methods through which I can diagnose? Now you need to remember कि बहुत सारे अपने पास पेशेंट्स आते हैं जिसमें वो लोग अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स लेके आते हैं एंड दे शो दैट द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट हैज रिटन एज एन इंप्रेशन, अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन, दे राइट दैट देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. नाउ यू नीड टू रिमेंबर दैट एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इज नॉट एन अल्ट्रासाउंड और अ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग. एंडोमेट्रियल थिकनिंग इज अ रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग. सो अगर रेडियोलॉजी की मैं बात करूं या फिर अल्ट्रासाउंड, सेम थिंग, उस पे एंडोमेट्रियल थिकनिंग देना चाहिए हमेशा, बिकॉज ऑल यू कैन नो इज वो थिक है या थिन है. वेरएज हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब तुम लोग एंडोमेट्रियम का करते हो आफ्टर डूइंग अ क्यूरेटाज, उस पे आ सकता है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. So whenever an ultrasound is giving a report of endometrial hyperplasia, it is not valid. They should be calling it endometrial thickening because यही endometrial जो thickening है उसमें it can be hyperplasia or it can be a simple physiological change. So the first line over here says the same thing कि diagnosis of endometrial hyperplasia requires histopathological examination of the endometrial tissue. इट शुड इन्वॉल्व ईदर हम लोग आउट पेशेंट मतलब ओपीडी में बैठे बैठे हम लोग उसका बायोप्सी कर सकते हैं या फिर उसको एडमिट करा के हम बायोप्सी कर सकते हैं. सो अभी कैसे करना है ये सवाल है कि करना ही है तो कैसे करेंगे हम. Now there are multiple ways that I can be doing it in an OPD setup. So now if I'm sitting in my OPD, it is very comfortable for the patient as well. अगर मैं OPD के setup में करने वाला हूँ,
So OPD में I have two options. I can either use a pipel. A pipel is a structure, or I'll say it's a very thin pipe. एकदम ऐसा पतला सा पाइप होता है. It's a very tube cylindrical लंबा सा पाइप जिसको अगर तुम लोग यूट्रस के अंदर डालोगे और नीचे से थोड़ा वैक्यूम से सक्शन करोगे, इट विल क्यूरेट आउट और इट विल टेक अ सैंपल. उसको हम लोग ये भी कहते हैं एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन. Endometrial aspiration. Aspiration क्यों? Because it is going to suck out. It will suck out a bit of endometrial tissue which is adequate for sampling. Endometrial ये पिपेल जो होता है वो एकदम छोटा सा होता है. I think it is around 0.5 centimeters, उससे भी कम रहेगा in diameter. So it goes inside the cervix very easily to take the sample. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज पेशेंट को कुछ एडमिट करने की जरूरत नहीं है, एनेस्थीसिया देने की जरूरत नहीं है. अगर पेन हुआ तो उसको एक एनसेड में डाइक्लोफेनेक या पैरासिटामोल देके ठीक कर सकता हूँ. The other option is what I can do is I can do an office hysteroscopy. Office is basically my OPD, तो इसको मैं OPD भी बोल सकता हूँ. OPD hysteroscopy. Now, what is hysteroscopy? Hysto is uterus, scopy is camera. I insert a camera inside my uterus. Now, you will think कि ये तो हम लोग admit करके करते हैं. Yes, you do it admit करके, but ये वाला जो office hysteroscope है ना, वो बहुत एक special office hysteroscope होता है. इसका जो diameter होता है ना, वो सिर्फ 2.7 mm का होता है. So इसको हम लोग कहते हैं office hysteroscope. 2.7 mm is इतना सा. इतना छोटा सा अगर अंदर डालोगे, there is not going to be any pain, and hence 2.7 centimeter, which is technically equal to 2.5 millimeter, which is equivalent to 0.2 centimeter. It is going to be relatively painless. Patient को फिर से एडमिट करने की जरूरत नहीं है. Plus you get the advantage of being able to see for yourself कि यूट्रस के अंदर कोई पॉलिप है या फिर कोई सर्टन एरिया है जहां पे ज्यादा एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन है. So in this they say that diagnostic histoscopy, ये ऑफिस हिस्टोस्कोपी हो गया और पिपेल हो गया. दीज आर द टू वेज. अगर पिपेल से नहीं हुआ मेरे से एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन, देन आई गो अहेड एंड डू ऑफिस हिस्टोस्कोपी. बट बहुत सारे सेटअप्स में देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस ऑफिस हिस्टोस्कोपी. सो इन दीज पेशेंट्स यू एडमिट देम एंड यू डू अ प्रॉपर डायग्नोस्टिक हिस्टोस्कोपी to obtain the endometrial sample, where outpatient sampling fails or is non-diagnostic. मतलब मैंने किया, मैंने सैंपल भेजा और उन्होंने बोला वो inadequate है, या फिर मैंने निकालने की कोशिश की बट कुछ आया ही नहीं. That is when I admit this patient. I can do it in the OPD as well. मैं office hysteroscopy कर सकता हूँ, but even if that is not available or that fails, then I admit that patient operation theater में लेके जाता हूँ और नीचे से मैं अच्छा खासा एक हिस्टोस्कोप डाल के एनेस्थीसिया के नीचे पेशेंट को देखता हूँ. They say that transvaginal ultrasound may have a role in diagnosing endometrial hyperplasia. It will have a role in diagnosing endometrial hyperplasia, but it is not going to be a firm diagnosis, because all they can tell us is whether there is endometrial thickening or not. Again, direct visualization of the biopsy of uterine cavity using histoscope should be undertaken where endometrial hyperplasia has been diagnosed within a polyp. So basically जब अल्ट्रासाउंड मैंने किया है और उसमें मुझे एक एंडोमेट्रियल पॉलिप दिखा है. व्हाट इज अ पॉलिप? अगर ये मेरा यूट्रस है ऐसा यहाँ पे, तो अंदर ऐसा कोई भी ऐसा छोटा सा ग्रोथ हो गया होगा पॉलिप वाला. पॉलिप इज बेसिकली ऐसा कोई ग्रोथ हो गया है छोटा सा 2-3 mm का या फिर 1 या 2 सेंटीमीटर का. इन दीज केसेस it is recommended that you don't go ahead and you do a blind curettage. जो हम लोग dilatation and curettage करते हैं, it is not advisable, because if it is a polyp, I would want to see if there is any growth around that polyp. प्लस वो पॉलिप कहाँ है वो मैं देख के विजुअलाइज करके निकालना प्रेफर करूंगा, rather than doing a blind curettage and ending up missing the polyp completely. काफी बार अगर मैं blindly DNC करता हूँ तो वो पॉलिप शायद बाहर आए भी ना. तो पहले कैमरा डालो, हिस्टोस्कोप डालो, देखो कहाँ पे, and then do a curettage. They also said that there is insufficient evidence regarding CT scan करना है कि नहीं. CT scan is basically radiation ज्यादा है प्लस उसका उतना फायदा नहीं है. You can do diffusion weighted MRI, but it is still in, I'd say, research purposes, plus the cost of doing it is very high. एक सादे से endometrial hyperplasia के लिए you wouldn't want to do an MRI, वो भी diffusion weighted वाला. So though it has an excellent sensitivity, the cost does not warrant या फिर it does not justify you doing it for merely endometrial hyperplasia. Endometrial cancer के लिए you can do it, but for endometrial hyperplasia, don't do it. The next question is, अभी अपने पास 2014 के हिसाब से दो थे. One was hyperplasia with typical cells and the other one was hyperplasia without typical या फिर with atypical cells. So if there is a female who has endometrial hyperplasia without atypia, यानी she has a typical endometrial hyperplasia according to 2014 classification, how should I be managing it? Now the important point here is that over the next 20 years, the risk of malignant transformation is less than 5% in these women. So
फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया विदाउट एटिपिया, मतलब एटिपिकल सेल्स नहीं है, इसमें मैलिग्नेंसी का रिस्क इज लेस देन 5%। ओवर 20 ईयर्स, वो भी मतलब 20 ईयर्स अगले उसमें भी अगर देखूंगा तो लेस देन 5% है। प्लस मेजोरिटी ऑफ दिस केसेस विथ hyperplasia without atypia will regress spontaneously, मतलब कुछ भी नहीं करोगे, if you just let her be alone and you repeat the procedure of dilatation and curettage and check her endometrial sample after 6 months or after 1 year, most of these patients, almost 90% of these patients will have remission. The hyperplasia would have gone away by itself. क्यों? Because ये बहुत बार होता है because of anovulation, मतलब ओवुलेशन नहीं हो रहा है, बट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 5-6 मंथ शी माइट हैव वन एपिसोड ऑफ ओवुलेशन, एक बार गलती से वो ओवुलेट कर जाएगी एंड उसमें जो प्रोजेस्टेरॉन आएगा दैट विल एंड अप पूरी तरह से उसका जो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है उसका एट्रोफी कर देगा एंड इट विल रीसेट द एंडोमेट्रियम बैक टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड हेंस ये जो विदाउट एटिपिकल सेल्स वाला हाइपरप्लेजिया है उसमें कुछ नहीं भी करोगे देन देयर इज अ गुड चांस दैट इट इज गोइंग टू गो अवे स्पॉन्टेनियसली। इन दिस केस आई हैव टू आइडेंटिफाई हेंस, मतलब ये जो एटिपिकल सेल्स के बिना वाला हाइपरप्लेजिया है, इन दिस आई हैव टू आइडेंटिफाई कि व्हाई हैज दिस हाइपरप्लेजिया देन अकर्ड इन फर्स्ट प्लेस। So the biggest factors are obesity and use of hormone replacement therapy. So these are two factors which I can modify. Obesity, I can ask the female to start doing exercises. If she is morbidly obese, यानी उसका 30, 35, 40 के ऊपर का BMI है, in that case I will recommend a bariatric surgery for her. Bariatric surgery अगर वो करेगी तो not just her endometrium, उसको in general बहुत सारे benefits होंगे, be it her cardiovascular health, be it the risk of stroke, बहुत सारे उसको चेंजेस आएंगे, उसको इन जनरल बेनिफिट होगा एंड उसमें से एक बेनिफिट होगा उसके यूट्रस में। सो आई विल राइट टू मॉडिफाई हर ओबेसिटी। अगर उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जा रहा है ना, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आता है दो फॉर्म्स में। ये दो फॉर्म्स कौन से हैं? देयर आर टू फॉर्म्स और देयर आर टू वेज इन विच आई कैन गिव इट। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक दिया जाता है सीक्वेंशियली और एक दिया जाता है कंबाइंड इसमें। सो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है एक होता है सीक्वेंशियल और एक होता है कंबाइंड। ये जो सीक्वेंशियल है इसमें हम क्या करते हैं, पहले 14 डेज है और बाद में 14 डेज है, 28 डेज का साइकिल है अपना। सो पहले 14 डेज में हम लोग ईस्ट्रोजन देते हैं और नेक्स्ट 14 डेज में हम प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। तो सीक्वेंशियली देते हैं बिकॉज इन योर यूजुअल साइकिल्स, तुम्हारे फिजियोलॉजिकल साइकिल्स में भी तो यही होता है कि डे 14 पे ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लूटेम बनता है और फिर जाके उसमें प्रोजेस्टेरॉन बनता है। सो इट मिमिक्स योर साइकिल। सो पहले 14 डेज ईस्ट्रोजन देते हैं और सेकंड 14 डेज में सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन देते हैं। वेरएज कंबाइंड में हम लोग पहले 14 डेज में भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक साथ देते हैं और बाद में भी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन एक साथ देते हैं। सो इफ अ फीमेल इज रिसीविंग दिस सीक्वेंशियल, ये पहले जो 14 डेज जिसमें सिर्फ ईस्ट्रोजन मिल रहा है, दिस इज द रिस्की पीरियड। ये वो पीरियड है जिसमें देयर इज अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन दैट यू आर गिविंग टू द बॉडी। तो इसमें क्या करना है, इधर यू स्टॉप दी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एंड यू गिव हर सम ऑल्टरनेटिव नॉन हार्मोनल मैनेजमेंट। उसको अगर वेजोमेट्रो सिम्टम्स है तो उसको गाबापेंटिन दो, उसको एसिटालोप्राम दो, एसएनआरआई, एसएसआरआई ये सब दो, या फिर तुम लोग उसको कंबाइंड पे शिफ्ट करो। कंबाइंड में क्या होगा, उसको ईस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरॉन भी मिलेगा। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है वो एंश्योर करेगा कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया ना हो। सो यूज ऑफ एचआरटी शुड बी असेस्ड, if possible give her a non-hormonal method to manage her perimenopausal symptoms, and if that is not possible then change it from sequential to combined continuous method of hormone replacement therapy. Apart from that obviously I have to फॉलो हर अप, मुझे उसको फॉलो अप बायोप्सी करना है। वो कितने टाइम बाद करना है वो मैं बताऊंगा। यू हैव टू डू अ बायोप्सी अगेन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, यू हैव टू डू इट आफ्टर 6 months to know whether that endometrial hyperplasia without atypia has completely regressed or has it stayed or has it progressed to atypical hyperplasia. Progesterone treatment is indicated in women who fail to regress following observation and in symptomatic women with abnormal uterine bleeding. इसका ये मतलब है if a female is coming to you with excessive bleeding PV, जिसको तुम लोग ऐसे ही spontaneous resolution के लिए रुक नहीं सकते because she is continuously bleeding, उसकी वजह से उसको अनीमिया हो रहा है, in these women and in women जिनमें regression हो नहीं रहा है, the spontaneous regression which was supposed to happen in these women, it is not happening. So these are the candidates जिनको तुम लोग प्रोजेस्टेरॉन, सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स दे सकते हो। सो जैसे मैंने बताया कि देर आर सेवरल रिस्क फैक्टर्स विच आर रिवर्सिबल फॉर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। सो विच आर दिस फैक्टर्स? तो सबसे पहले तो हमने बात किया सीवियरली ओबीस विमेन जो है, इनको जो होता है उसको हम लोग बैरिएट्रिक सर्जरी रेकमेंड कर सकते हैं। सेकेंड इज एक्सोजीनस हॉर्मोन्स दैट इंक्लूड्स
HRT preparations that are being given for women which contain high potency estrogens. जितना ज्यादा बेटर estrogen दोगे उतना उसका अच्छा रेजोल्यूशन होगा हार्मोन इसका अपने मेनोपॉज के सिम्टम्स का। तो अगर मैं ऐसे कर रहा हूं कि उसको मेनोपॉज की वजह से मैं बहुत ज्यादा पोटेंसी का एस्ट्रोजन दे रहा हूं, उसका साइड इफेक्ट ये है कि उसको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा। तो ये मुझे रीअसेस करके रोकना है या फिर इसके साथ मुझे प्रोजेस्टेरोन कंबाइन करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर उसको ऑनगोइंग टैमोक्सिफिन थेरेपी है तो मुझे बात करनी है उसके ऑन्कोलॉजिस्ट से कि इज इट पॉसिबल दैट वी स्टॉप दैट टैमोक्सिफिन एंड गिव हर another drug like anastrozole, letrozole, that are aromatase inhibitors. Aromatase inhibitors are nowadays preferred over tamoxifen for estrogen receptor positive breast cancers. So I can ask her if I can ask her oncologist if that is possible, and if that is not possible, then I will simultaneously just start her on progesterone only pills because tamoxifen तो रोक नहीं सकता। तो उससे अच्छा मैं उसका progesterone start करता हूँ so that it will antagonize the action of that tamoxifen on the endometrial cells. Apart from that, anovulatory cycles are a major cause of endometrial hyperplasia, which is basically PCOD. तो PCOD के लिए ये जो फीमेल्स है उनको मैं वेट रिडक्शन बताऊंगा so that they start ovulating. If they are not getting those cycles despite weight reduction, तो उनको मैं OC pills चालू करूंगा, progesterone pills चालू करूंगा so that they have बाहर से progesterone that is coming into their body because खुद का progesterone तो बन नहीं रहा है. So what should be the first line management for these patients? So yeah. So the next question that comes to my mind is what should be the first line management for women without atypia? Now let us assume कि ये कौन से पेशेंट्स है जिनको नहीं हुआ है, तो वो पेशेंट्स है जिनका मैंने फॉलो अप रखा है और उनमें रिग्रेशन हुआ नहीं है। आई डिड हर डीएनसी रिपीट आफ्टर 6 मंथ्स और उसमें मैंने एंडोमेट्रियल एस्पिरेशन डीएनसी किया एंड आई सॉ कि उसको अभी भी है उसका एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, दो इट इज विदाउट एटीपिया बट अभी भी है। So these are the candidates, and secondly, the candidates who are having excessive bleeding per vaginum. So in these patients, I have the option of either giving continuous local or oral progesterone. So it can be given in the form of progesterone only pills, or I can give it in the form of LNG, that is levonorgestrel intrauterine system. प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स, इसमें दो ऑप्शन है मेरे पास, मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट, या फिर सेकंड ऑप्शन है मेरे पास अगर देना है तो नॉर एथिस्टेरॉन। द डोज यहां पे उन्होंने दिया गया है, अगर मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसिटेट देना है तो 10 to 20 mg पर डे, 10 to 20 mg पर डे दे सकते हो, और अगर नॉर एथिस्टोन देना है तो वो 10 to 15 mg पर डे दे सकते हो। व्हाट आर द ड्रग्स दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट? ब्रांड नेम्स क्या है? For medroxyprogesterone acetate, सबसे कॉमन ब्रांड दैट आई हैव माई सेल्फ प्रेस्क्राइब्ड इज tablet Devry. Devry is DEVIRY. Devry आता है टोरेंट कंपनी का, which can be given in the form of 10 to 20 mg per day. There are other tablets also like tablet Meprate that are given, but I personally prefer giving Norethiston. Norethiston के multiple नाम है, एक तो Primolute आता है, Primolute N, which is from Bayer company. Then there is Ciceron. Then there is Normoral. There are multiple Registron. There are multiple brands जो ये Norethistron देते हैं. They have to be given. बहुत बार ये जो आते हैं वो 5 mg और 10 mg में आते हैं. So you either give 5 mg thrice a day or you just give 10 mg का एक tablet if it is available. So medroxyprogesterone acetate or norethisterone is preferably given. The other option is to give levonorgestrel intrauterine system, जिसका most common नाम that we know of is Mirena. So ये जो Mirena है, MIRENA, तो Mirena जो है इसके बाकी के भी ब्रांड्स है लाइक Emeril. Mirena was one of the first companies that made this and it contains 52 milligrams of levonorgestrel. ये 52 मिलीग्राम रोज 20 माइक्रोग्राम के फॉर्म में छोड़ता है levonorgestrel in the body. So they say that LNG IUD, that is Mirena, should be the first line management. It should be preferred over, should be the first line management because it has a much higher disease regression and a better bleeding profile. अभी ऐसे क्यों होता है? Because उन्होंने यहाँ पे दिया गया है कि जो LNG IUS है, it has been seen that it achieves higher concentrations. यहाँ पे देखो, it has seen to achieve higher concentration at the level of endometrium in comparison to oral progesterones. Also, you have to remember that LNG IUS है वो ये जो आता है around 3500 का आता है. This stays inside you for a period of at least 5 to 7 years, minimum of 5 years. 5 years पे 3000 रुपीज का खर्चा है.
Whereas ये जो मेट्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन और जो नॉरेथिस्ट्रॉन है, इसका ये जो खर्चा है 2-3 हजार का, ये ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स में ही पूरा निकल जाएगा. सो कॉस्ट वाइज levonorgestrel basically Mirena is better. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लोकल एक्शन, बिकॉज इट्स अ लोकल, वहीं पे है, एंडोमेट्रियम के बीच में है ये मिरेना का जो डिवाइस है, इसकी वजह से द लोकली अचीव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बेटर है. सिस्टमिक जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है. ओरली जब मैं लेता हूँ पूरे सिस्टम में मेरे प्रोजेस्टेरॉन चला जाता है, जिसके वजह से ऑल द साइड इफेक्ट्स, नौशिया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, ये सब जो सिम्टम्स है ये बहुत ज्यादा है इन प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स. एंड हेंस progesterone only pills can only be given for a period of 6 months, not more than that, because then they start giving side effects. Whereas LNG-IUS, Mirena, can be kept in situ for 5 years and you don't need to look behind. And hence, levonorgestrel should be the first plan of management which is given. Apart from this, if you ask me progesterone only pills कैसे देना है, then the answer is cyclical progesterone should not be given. इसका ये मतलब है, यू डू नॉट गिव इन द फॉर्म ऑफ 21 डेज देना, जैसे तुम लोग कॉन्ट्रासेप्शन के लिए देते हो कि 21 डेज दे दो, फिर 7 डेज मत दे दो, देन फिर से 21 डेज दे दो. नो, यू डोंट गिव इट दैट वे, बिकॉज ये जो 7 डेज आएंगे दे आर गोइंग टू बी अगेन कॉजिंग एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. इंस्टेड यू शुड बी गिविंग देम कंटिन्यूअस ओरल प्रोजेस्ट्रॉन्स. एंड यही कंटिन्यूअस ओरल प्रोजेस्ट्रॉन जब दोगे विदाउट अ ब्रेक फॉर 6 मंथ्स, तब जाके ये रिग्रेशन वो हाइपरप्लेजिया का होगा. इफ यू कैनॉट गिव इट, अगर वो फीमेल मिस कर दी वो एक टैबलेट, शी विल स्टार्ट ब्लीडिंग, शी विल हैव विड्रॉल ब्लीडिंग. ये सब मंजन चाहिए ही नहीं, इसलिए हम लोग एलएनजी आईयूएस प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो तुम्हारे अंदर रहेगा. कंप्लायंस का तो कोई सवाल ही नहीं आएगा. बेसिकली अ फीमेल डज नॉट नीड टू रिमेंबर टेकिंग दैट टैबलेट डेली. दैट एलएनजी इन दैट इज मिरेना इज गोइंग टू स्टे इनसाइड हर continuously, so question of compliance is ruled out. The next question very obvious, कब तक उसको मॉनिटर करना है? So they say that treatment with oral progesterone or LNG should be for a minimum of 6 months, as I mentioned earlier, to induce histological regression of endometrial hyperplasia. So at least 6 months you have to be giving them those tablets. So 6 months bare minimum तुम्हें देना है पेशेंट को प्रोजेस्टेरॉन only pills या फिर levonorgestrel intrauterine system, Mirena basically. So after this, after 6 months, what do? I call this female back to me. If she's consuming POP, then I'll just take an endometrial aspiration. If she's having a levonorgestrel intrauterine system, then I'll just admit her, or I will insert an office cystoscope inside her. I will see वो मिरेना कहाँ पे है, और उसके बाजू से मैं एंडोमेट्रियम का एस्पिरेशन या फिर क्यूरेटाच करूंगा, so that I don't end up removing the LNG IUS. And hence with that LNG IUS in situ I will do. This is an exam question कि अगर फीमेल को तुमने LNG डाला है, अंदर मिरेना डाला है, तो कैसे करोगे तुम लोग इवैल्यूएशन? वुड यू रिमूव इट एंड देन रीइंसर्ट इट? नो, यू डोंट रिमूव इट, बिकॉज देन इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज. नया नहीं डालोगे क्योंकि वो अननेसेसरी खर्चा है. सो व्हाट विल यू डू? यू विल कीप इट इन सिटू, यू विल सी वेयर इज इट, और उसके बाजू से एंडोमेट्रियम तुम लोग निकाल के थोड़ा पिपेल से एस्पिरेट करके या फिर डायलेटेशन एंड क्यूरेटाच करके उसको भेजोगे सैंपलिंग के लिए. अगर पेशेंट को इसके बहुत साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं या फिर फर्टिलिटी इज नॉट डिजायर्ड, देन इन दीज वुमेन यू कैन कंसिडर अ हिस्टेक्टोमी. अपार्ट फ्रॉम दैट, एंडोमेट्रियल सर्वेलेंस इज रिकमेंडेड आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब बाहर ही बाहर ओपीडी के बेसिस पे भी तुम कर सकते हो बाय यूजिंग अ पिपेल और एन ऑफिस हिस्टोस्कोप. यू डोंट नीड टू एडमिट इट. इफ एट ऑल यू नीड टू एडमिट, उसके इंडिकेशन हमने पहले ही देखे, दैट ओपीडी में यू हैव नॉट बीन एबल टू डू इट प्रॉपरली. It should be done at a minimum of 6 monthly intervals, and 2 consecutive 6 monthly negative biopsies are required to call that female free from endometrial hyperplasia. So 2 negative मतलब एक 6 months के पीरियड पे और एक 12 months पे. So basically an evaluation of twice a year is required, and दोनों negative आने चाहिए reports for me to tell that female that you are now free of endometrial hyperplasia. There is one risk factor wala group, and that is women with a BMI of 35 or more, or those who were treated with oral progesterone. 6 monthly biopsies are considered. But if this female is quite obese, then you might also consider having to do it annually after that period of 1 year is done with. So the next question that arises here is, when is surgical management appropriate? So now if a female is having this atypical I mean typical endometrial hyperplasia, do I still do a hysterectomy? Do I still do a surgical management for her? Then the answer is, the first line management is never hysterectomy. It should not be considered as a first line management for hyperplasia without atypia, because progesterone therapy is adequate to induce remission
हिस्टोलॉजिकली एज वेल एज जो उसको एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग आ रही है, सिम्टोमेटिक रेमिशन भी प्रोजेस्टेरोन अच्छी तरह से दे देगा. सो यू डोंट नीड टू कंसिडर हिस्टेक्टमी. बट इट इज इंडिकेटेड कब? when there is progression from typical to atypical hyperplasia during the follow up, or there is no regression of hyperplasia even after 12 months of treatment. मैंने उसको 12 months progesterone pills दे दिए या फिर LNG IUD डाल दिया, and even after a year of the first diagnosis, if there is no regression, these are the patients जिनमें मैं hysterectomy करूंगा. Apart from that, if there is any relapse of endometrial hyperplasia a few years after completing the progesterone treatment, or there is persistence of bleeding symptom, मतलब despite giving progesterone she is resistant to medical management, or she just declines to undergo endometrial evaluation, or she says that I cannot come to you again and again, these are the patients जिनमें तुम करोगे. So what are the indications for hysterectomy? So hysterectomy in patients with endometrial hyperplasia without atypia. So what are the indications? The first one is when typical का हो चुका है atypical, there is progression. Secondly, when typical has stayed for 12 months, it has not regressed, no regression of typical despite treatment. So typical का typical ही रह गया. Third, there is relapse of endometrial hyperplasia. Fourth, if there is no remission of complaints, so basically अगर उसको abnormal uterine bleeding है, उससे कोई remission नहीं मिला है. And finally, fifth, if patient is not compliant or not willing to come back for evaluation, not compliant to medical management. So these are the 5 indications जिनमें तुम लोग hysterectomy करना चाहोगे in females who have endometrial hyperplasia without any atypia. One question that arises here is there is something called as endometrial ablation, wherein basically I put something. There are multiple generations of devices. I can use hot water, I can use an electric probe. There are multiple generations, basically first, second and third generation है जिसमें I can do endometrial ablation. So I insert these devices inside and I end up eroding or burning the entire. Burning is a very gross term, a crude term I'll say, but endometrial ablation is just ablating all the endometrium. Should that be done for endometrial hyperplasia? The answer is no. It is not recommended for the treatment because there is no guarantee कि पूरी तरह से endometrium destroy हो गया है कि नहीं. And secondly, after destroying the endometrium, you have even eroded the basal endometrium. So इसके बाद intrauterine adhesions होगा, and hence when a patient is going to come back to me for endometrial evaluation after 6 months because of Asherman syndrome, fibrosis जो हो गया रहेगा, मेरा endometrial curettage will become very difficult, and hence endometrial ablation is not advised for females with endometrial hyperplasia. The next topic, how should endometrial hyperplasia with atypical hyperplasia be managed? The first management is definitely सबसे पहले total hysterectomy करो because the risk of malignancy is very high. The risk is as high as 20% over the next 20 years. So पहले जो 5% था over 20 years, यहाँ पे 20% हो गया है. So definitely it merits doing an immediate hysterectomy. Apart from that, a laparoscopic approach is preferred to a total hysterectomy. यानी abdominal से better है laparoscopic hysterectomy only if you have the available expertise to do even lymph node dissection and all if it is required. Though you do not do lymph node dissection, but intraoperatively तुम्हें ऐसे findings मिल गए कि उसको endometrial cancer हो सकता है, so a person should be well adept at doing this. Hence, laparoscopy is better if you have proper availability of resources and expertise to do it. There is no benefit of sending intraoperative frozen section. Frozen section क्या होता है? हम लोग intraoperatively वो यूट्रस निकालते हैं, हिस्टेक्टमी करते हैं, we send that hysterectomized uterus to a pathological लैब. वहां पे वो 10 मिनट में फटाफट स्लाइड्स बना के ऊपर से देखता है माइक्रोस्कोप के नीचे कि इज देयर एनी प्रेजेंस ऑफ एटिपिकल सेल्स. वी वेट अंटिल देन टू प्रोसीड, क्योंकि हम क्लोज भी नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि अगर उसने बताया कि हाँ मैलिग्नेंसी है, देन आई विल नीड टू डू एंडोमेट्रियम जो अपन ने हिस्टेक्टमी कर दिया उसके साथ आई विल ऑल्सो नीड टू डू lymph node dissection and a radical hysterectomy in these patients. So I wait until the report arrives, which takes from 15 to 20 minutes. So is it required in patients with endometrial hyperplasia even if it is atypical? No, it is not required. Neither is there any requirement of routine lymphadenectomy. Lymphadenectomy तुम लोग pelvic lymph nodes, para-aortic lymph nodes ये सब निकालोगे,
तो उससे क्या होगा, पेशेंट को सीरोमास बैठेगा, पेशेंट का लाइफ जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट विल डिग्रेड वेरी सिग्निफिकेंटली एंड हेंस यू डू नॉट नीड टू increase that surgical morbidity. Hence, avoid doing a routine lymphadenectomy. Bilateral salpingoophorectomy करना है या नहीं? Definitely, if a female is postmenopausal, the cause of that endometrial hyperplasia was the estrogen that was being produced in the ovaries. She is postmenopausal, that ovary does not need to be there, so I'll remove it. Because also you need to remember that in women who might have endometrial cancer, in these women there is also an increased risk of ovarian cancer simultaneously. Hence, in these women you also need to remove the tubes and the ovaries. Tubes क्यों? क्योंकि most of the cancers, the epithelial cancers are seen to arise, especially serious malignant cancers of the ovary are seen to arise from the femoral end of the fallopian tube, and hence you need to remove both the fallopian tube as well as the ovary. For premenopausal women, a consideration should be given to bilateral salpingectomy के साथ oophorectomy as well, but preferably keep the ovaries because she is still not menopausal. उसकी ovaries में जो estrogen बन रहा है उससे उसको menopausal symptoms नहीं आएंगे, but at least you have to do bilateral salpingectomy क्योंकि as I mentioned before, fallopian tube is the point जहां पे especially the femur is the point जहां पे malignant serous epithelial cancer of the ovary form होना start होता है. Apart from that, again, endometrial ablation is not recommended. अरे वो तो recommended था ही नहीं इवन टिपिकल हाइपरप्लेजिया में. तो एटिपिकल में तो सवाल ही नहीं उठता है कि उसका recommendation होगा या नहीं. सो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि what is the risk, there is no comparative study, the same thing that I have mentioned here. Also there is one important part यहाँ पे, you should avoid doing morcellation if you are doing laparoscopy. Morcellation is basically तुम लोग अंदर एक डिवाइस डाल के यूट्रस के छोटे छोटे टुकड़े करके निकालते हैं. मॉर्सेल इज बेसिकली हम लोग मॉर्सेल इज बेसिकली स्मॉल बाइट जो हम खाने के लेते हैं. सो मॉर्सेलेशन इज मेकिंग स्मॉल बिट्स एंड पीसेस ऑफ द स्पेसिमेन टू रिमूव इट फ्रॉम दैट laparoscopic port. Do not do it, it should be avoided because if there is any possibility of malignancy, it will disseminate that malignancy. Again, supracervical hysterectomy should not be performed because cervix is another point जहां पे malignancy from the endometrium can go, plus cervical cancer के खुद के risk अलग से होता ही है in Indian women, so do not do it. Just remove the entire cervix and the uterus along with the tubes. Ovary निकालने हैं, depends upon the menopausal status of that female. What should I be doing in case that I have an unfortunate female जिसमें endometrial hyperplasia with atypia हो गया है, but she wants to preserve her fertility. She says that I have not yet conceived. Let's say she is a female of the age of 30, 35. She says that I have delayed my childbearing because of my career related issues and my personal issues. I do not want to remove my uterus. So first of all, I should tell her कि there is an increased risk, almost 10 to 20% का risk है underlying malignancy का and subsequent progression to endometrial cancer. I have to inform her this. Then I have to rule out invasive endometrial cancer and coexisting ovarian cancer. I can do this by doing an MRI, CT scan, and also doing a proper endometrial curettage. Histology and tumor markers should also be reviewed to see if there is any possibility. Endometrial cancer के लिए there are no markers, whereas ovarian cancer के लिए epithelial है. Then you have CA125 that you can do. In these women, the first line management again is going to be LNG, IUD, or oral progesterones as second best alternative. Oral progesterones again side effects हमने बात की है that it cannot be given for longer than 6 to 12 months. Apart from that, LNG, IUD 5 साल रह सकता है. It should be given as a temporary option, but she has to be informed that once you are done bearing your children, once you have done conceiving, baby deliver होने के बाद, once the fertility is no longer required, hysterectomy should be offered because रिलैप्स होने के या फिर मैलिग्नेंसी आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. हाउ शुड वी बी फॉलोइंग अप दीज विमेन जिनको एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है एंड वी आर नॉट डूइंग अ हिस्टेक्टमी फॉर देम? सो इन दीज विमेन वी वर डूइंग द follow up for women who did not have atypical hyperplasia every 6 months. In these women we should be doing जिनमें atypical hyperplasia है every 3 months until 2 consecutive negative biopsies are obtained. इन विमेन जिनमें ये हो जाता है लॉन्ग टर्म 6 to 12 मंथ्स पे तो करना ही है until hysterectomy is done. तो सबसे पहले मैं करूंगा, I'll just revise that पहले का पार्ट. अगर atypical, उसको जो हमने पहले बात किया, पहले we'll just talk about typical, हमने typical का बात किया था. So if there was typical endometrial hyperplasia, so in these we did first at 6 months followed by 12 months. अगर दोनों नेगेटिव है then we do not do it again.
बट अगर एटिपिकल हाइपरप्लेजिया है, atypical endometrial hyperplasia है, then we do it first at 3 months, then I do it at 6 months. अगर ये दोनों नेगेटिव है तो मैं 12 मंथ्स पे करूंगा, फिर 18 मंथ्स पे करूंगा, फिर 24 पे करूंगा, ऐसे 6 to 12 मंथ्स पे तो करते ही रहूंगा until I do her hysterectomy. नेवर स्टॉप डूइंग. एक बार रिपोर्ट अगर आ जाए एटिपिकल हाइपरप्लेजिया का, सो इवन इफ लेटर ऑन बिकम्स टिपिकल इन वन ऑफ द सब्सिक्वेंट रिपोर्ट्स, डू नॉट स्टॉप डूइंग दिस surveillance for her, because there is an increased risk of relapse as well as possibility of malignancy. So 3 and 6 पे करना है. अगर ये दोनों नेगेटिव आता है तो 12, 18, 24 ऐसे करना है. यहाँ पे 6 and 12 में अगर नेगेटिव आ गया इन टिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग इसके बाद में. How should I be managing endometrial hyperplasia? Now remember कि ये progesterone only pills and levonorgestrel जो है, these are all contraceptive agents as well. So if I'm going to be giving this woman these options and she wants to conceive, it is impossible for her to conceive because इसका ये भी काम है कि contraception ensure करे. So in this women, I should do first of all at least एक sample पे, preferably two. There should be disease regression. Regression यानी मैंने क्यूरेटच किया, आई गेव हर ऑल द ट्रीटमेंट विद प्रोजेस्टेरॉन, देन आई डू अ रिपीट क्यूरेटच फॉर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, बी इट 6 मंथ्स और 6 मंथ्स, एंड आई चेक द सैंपल. अगर सैंपल में दिख गया कि रिग्रेशन हो चुका है, अभी फिलहाल एटिपिकल हाइपरप्लेजिया नहीं है, या फिर टिपिकल एटिपिकल का टिपिकल बन चुका है, सो इधर दैट एटिपिकल जो पहले हाइपरप्लेजिया था, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया जो था उसका इधर कंप्लीट रेमिशन मतलब नो हाइपरप्लेजिया हो गया है, विच इज वेरी अनलाइकली, या फिर टिपिकल हाइपरप्लेजिया में कन्वर्ट हो गया है. These are women, they can now conceive. So if I have one such report, they can be ready to conceive. Preferably two reports, but at least अगर one report आया है, so I can conceive at that point. So basically यहाँ पे ये जरूरी है कि ये conversion होना चाहिए. If this female is still in atypical hyperplasia, do not conceive. There is no point of conceiving in such women. I should be telling them that you should be going to a fertility specialist because I cannot be letting you conceive naturally. Because उसके लिए अगर तू naturally conceive करने जाती है, it will take a long period without any progesterone or LNG for you to conceive naturally. So preferably जा और तू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से कंसीव कर. सो बेसिकली आईवीएफ से कंसीव करो सो दैट यू कंसीव इमीडिएटली, एंड हेंस द गैप बिटवीन स्टॉपिंग ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड कंसेप्शन इज बेयर मिनिमम, एंड देयर इज नो रिलैप्स ऑफ द एंडोमेट्रियल एटिपिकल हाइपरप्लेजिया. अपार्ट फ्रॉम दैट, द लास्ट पार्ट ऑफ टुडे इज women जो हमने पहले ही बात किया था, who are taking HRT. So if a female who is taking endometrial hyperplasia and taking sequential HRT preparation, they have to be advised कि continuous पे shift हो जाओ. We have already discussed this, and along with it LNG IUS डालो. Apart from that, women who are taking adjuvant therapy with tamoxifen, who are taking, we have already discussed, जो tamoxifen ले रहे हैं for breast cancer, they have to be mentioned. We have to talk to their oncologist कि इनको aromatase inhibitors जो ये है anastrozole, letrozole, इन पे convert कर सकते हैं क्या, या फिर अगर convert नहीं कर सकते हैं, if I cannot stop tamoxifen for her, if women on tamoxifen, can I start her with progesterone? Yes, they say कि LNG IUD अगर मैं डालूंगा, Mirena डालूंगा तो पॉलिप कम हो गए चांसेस, एंडोमेट्रियल चांसेस कम होगा, बट देयर इज अ प्रॉब्लम that there is a risk that the breast cancer which is sensitive to progesterone might relapse. So it is not yet recommended कि LNG IUD डालो, but in my personal experience, and also they have done an analysis that confirm that endometrial hyperplasia is reduced in patients जिनमें हम लोग LNG IUD डालते हैं. So in my experience on women who are having endometrial hyperplasia and are taking tamoxifen, in these women at least for a period of 1 year, because most of these tamoxifen treatments are over within a year of starting them. एक साल के लिए उनको LNG IUD डालो and then remove it, because progesterone in itself can lead to an increased risk of breast cancer. So no longer than 1 year should this LNG IUD be given, though the guideline still says that it is still not recommended to even give it even once. Rather, you consider shifting her to an aromatase inhibitor. Lastly, what if a female develops endometrial hyperplasia while on tamoxifen treatment? We have to understand that though there is a risk of developing cancer, I have to try to stop tamoxifen, and if I cannot stop, then I start the female on LNG IUD or I give her oral progesterone.
So that is it about our lecture today on endometrial hyperplasia. Today we spoke of multiple aspects of endometrial hyperplasia. सबसे पहले हमने 2014 का WHO classification पर बात किया. In that they have mentioned that there is endometrial hyperplasia with either typical cells or atypical cells. For women with endometrial hyperplasia with typical cells, the ideal management is either कुछ भी मत करो and recheck her after 6 months, or if you want to resolve it very quickly and you need to just resolve it anyhow, then you can consider starting her on progesterone. My experience, I do start these women who have endometrial hyperplasia on progesterone. I prefer to insert a Mirena insider because it ensures कि अगले 5 साल के लिए उसको hyperplasia नहीं होगा. Women who are not willing to insert it inside them can be started on oral progesterone. There are two drugs that are available, medroxyprogesterone and norethistérone, in the doses of around 10 to 15 milligram per day. Apart from that, in women who have endometrial hyperplasia and in whom there is a relapse कि बार बार endometrial hyperplasia without atypia हो रहा है, या फिर these women have now progressed to atypical cells or there is no remission of their bleeding, in these women I will consider a hysterectomy. Whereas in patients who have atypical cells from the beginning, I have to do a hysterectomy for her because the risk of getting malignancy is as high as 20% in a few studies. If a female says that no, I cannot remove my uterus because I still have to conceive, then I will start her on progesterone in the form of LNG, IUD, or in the form of oral progesterone, and I will try to induce regression in her. एक बार एक रिपोर्ट रिग्रेशन का आ जाए, then I will send her to an IVF specialist and ask her to conceive it with that. Apart from that, women who are taking hormone replacement therapy, if they are taking a sequential form of it, I will tell them कि combined ले लो. Sequential is basically पहले 14 days में estrogen, second 14 days में progesterone. I will say stop this, rather estrogen and progesterone combined तुम लोग ले लो पहले ही दिन से तुम्हारे cycle के. If not, I will try to shift her to non-hormonal methods of hormone replacement therapy. Non-hormonal include clonidine, gabapentin, escitalopram, etc. Women who are taking tamoxifen for breast cancer, if they have endometrial hyperplasia, I have to treat it with progesterone or I have to treat it with LNG IUD. I can even consider doing hysterectomy for her. If not, if they say that there is no hyperplasia but she has to take tamoxifen for a year, then for that period of 1 year, I will insert an LNG IUD, but I will immediately remove it because there is an increased risk of having breast cancer in these women. Alternative therapies to tamoxifen like aromatase inhibitors have to be considered in these women. I hope you understood this lecture, a very important topic, something that we see very often in our OPD setups. I hope you all enjoyed all these topics that we have discussed today, and I hope you are a better clinician when it comes to treating women with endometrial hyperplasia in your outpatient department. Thank you, and I'll see you in the next episode of Guideline Review of the Week. All the best.